Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, so welcome to the class of microwave engineering. Thank you, sir. Okay, before I start today's lecture, have you people have the printed Smith chart with you? Yes, sir. Okay. Sir. The reason I want you to have Smith chart and other tools because of the reason that whatever we will be discussing today, you will only be able to fully grasp the understanding if you follow along with me. Okay, so whatever step I want you to take, I expect you that you should have Smith chart right in front of you, and whatever I suggest, you should do that so that you can also practice it during the lecture, and later on you will be able to do it on your own. So today I will be continuing the design process of a matching network that we denoted with this nomenclature L network. So in my previous lecture, I designed L network, which is a circuit for matching using analytical method, and we derive equation, and those equations help us to design our network. Today we will be designing the same L matching network, but we will be making use of graphical tool that we have already covered in this course, and that is Smith chart. So today our goal is design procedure of L network using Smith chart. So just to refresh your memories, L network is a network which consists of capacitor and inductor in this particular arrangement. So let me draw the diagram for the two L networks that we discussed last time. So this is our main transmission line with characteristic impedance Z0. So we can insert reactive element represented by its reactance, capital X, which is connected in series, and there is another reactive element that we need to connect in parallel configuration. So we will represent it with by its susceptance represented by this symbol B. And then we will connect the load that we want to match, represented by impedance Z. This is one possible configuration of L network. And the second possibility is so now if you move from left to right, the first reactive element is connected in parallel, and then we connect the series reactive element, and then we will have a load. So this is something which we have covered, and the reason I have already mentioned this thing, that whenever we will connect any element, whether capacitor or inductor, in series with this transmission line, then we will represent that element by its reactance. Okay.
And whenever we connect any reactive element in parallel or shunt configuration, then we will represent that element by its susceptance. Okay. So this is susceptance of a reactive element, and this is reactance of a reactive element. So during our last lecture, we outlined that whenever you design L network, you have to decide, or you have to take two steps. The first step is to select the proper L network for the given load. So only one out of this circuit will be useful for us. Okay, so let me write down those points. That so these are two steps. First step is selection of suitable L network. And the second step during the design process will be determine the values of unknown parameters, that is X and B. So these are design steps. So we have already covered how to perform these two steps using analytical method. But today we are going to find out how Smith chart can be used to design this network. And whenever we are designing L network, we have to again uh, take these two steps, or two design process. One is selection, and then to find out the values of unknown. So let me write down the how you are going to take the first step, and that is selection of suitable L network using Smith chart. So the criteria that you will use for selection is, let me write it down. So already we know that whenever you are using Smith chart, you have to normalize the quantity. So what you need to do is normalize the given load. So whatever load is given to you just need to normalize it. And we already know that for normalization, we use Z naught. So ZL divided by Z naught is going to be our normalized load. So ZL divided by Z naught. Or it's also possible that load may be given to you in terms of its admittance. So if load is represented in terms of its admittance, that is YL, then in order to normalize it, you will divide it by Y naught. And Y naught is the inverse of Z naught. So Z naught is characteristic impedance, which we usually or normally used. Y naught is the corresponding characteristic admittance. So once you normalize the given load, then what you will do? Find the position of normalized load on Smith chart. So you already know how to do this thing. So once you have the normalized load, either in this form or in this form, you need to find out where this particular normalized load will be located on the Smith chart. So once you find the position,
Then if it is inside 1 plus jx circle, I will explain what is the meaning of this sentence. So let me write it down, and then we will go through it step by step. So if it is inside 1 plus jx circle on Smith chart, then select. So let me give the name so that we can, let me call this particular network as L network number 1, and let me call this as L network number 2. So if you have this situation that the position of the normalized load is inside 1 plus jx circle, then you should select L network number 1. Let me write it down, then select L network number 1. Okay. And if it is outside, if it is outside 1 plus jx circle on Smith chart, then select L network number 2. So the first design step that you need to perform whenever you are designing L network with the help of Smith chart, this is what you need to do. So in this process, what may be not apparent to you is, what is this thing? 1 plus jx circle that I am using. 1 plus jx circle on the Smith chart. So our selection of suitable network is based on this circle. If the normalized load, so if this normalized load is inside 1 plus jx circle, then you will be selecting this network. And if normalized load is outside of this circle on Smith chart, then L network number 2 will be the suitable network. Now, what is this 1 plus jx circle? So let me draw it, and then I will go to the actual Smith chart. So you already know that Smith chart uh, consists of resistive circles and reactive circles. So, and this is the horizontal line that is dividing the Smith chart into two halves, upper hemisphere and lower hemisphere. So 1 plus jx circle is the circle which is passing through horizontal scale with a reading of 1. So let me draw this circle, and then we will go to the actual Smith chart, and you may also, because Smith chart is also right in front of you as I suggested for this lecture. So you can identify that there is one resistive circle which is passing through the reading equal to 1, which is right the center. So this particular circle is 1 plus jx circle. So the real part is 1. Why it's 1? Because you already know that any resistive circle that is drawn on the Smith chart, it is drawn for a particular value of R. Because this circle is drawn for the value of R equal to 1, so that is why it's written 1.
and then plus jx. Why this value is represented in terms of variable? Because if you move on this circle, so x value is changing. If you move on this circle, r value is fixed, but x value is changing. So depending upon, if I am at this point, so of course r is 1 and x is 0. But then if you move anywhere on this circle, so x value will be, in this region x will be positive, and in this region the x value is negative. So x is changing. So that is why this circle is known as 1 plus x. So now you must have a Smith chart in front of you. So if you are still confused, so let me go to the, let me open the actual Smith chart, and then I will show you again. So this is the Smith chart that you must have right in front of you. Let me rotate it. It's not in the correct position. Okay, this is how Smith chart should be in front of you. Okay, so now which particular circle is 1 plus jx circle? So where is the center? This is the center, and you can clearly see it's written 1. You can easily read that it's reading, this is 1. So which particular resistive circle is passing through this? So this is the circle that you don't need to mark it. I'm just showing you that this is 1 plus jx circle on the Smith chart. Have you people identified it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So this is 1 plus jx circle. So whenever I am using this terminology, 1 plus jx circle, so you should know that I am referring to this particular circle on the Smith chart. So what was the criteria for the selection of suitable network? If the load position is anywhere within this circle, So let me draw these. These are these are possible positions of normalized load, and you can see all of these cross which are representing ZL, they are inside this circle. So whenever you have a situation like this, that the problem that you are solving, the normalized load position is somewhere within this 1 plus jx circle, then you are going to select or which network is going to solve the problem, that is L network number 1. Okay, and if it is outside, so outside means it can be anywhere. So all of these crosses that I am drawing, and they may be representing position of loads. So you can see all of these are outside of this 1 plus jx circle. So whenever you have this type of problem, then you are going to select L network number 2, and that is going to solve for problem. So you can see if you compare this method with the analytical method, you can clearly see that I am not using any equations. My selection is done on the basis of visualization. I just need to find out where is the normalized load with respect to this circle. And based on the position of the normalized load on the Smith chart, I am going to decide whether L network number 1 is going to solve our problem or L network number 2 is going to solve our problem. So
the explanation of this process. Okay, so first of all, you need to normalize the given load. Then you need to find its position. So there are two possibilities, inside or outside. So if it is inside L network number one, which is this one, you are going to select. So let me write it down. So if, let me represent the normalized load by ZL dash. So if ZL dash is inside 1 plus JXR, and L network number 2, if ZL dash is outside 1 plus JXR. Now let me take one example so that you practice this particular design process. So let's consider a problem. So what we are asked is design an L section matching network to match series RC load having impedance ZL equal to 200 minus J100 ohm to a 100 ohm line at a frequency of 500 megahertz. So we will solve this example with help of Smith chart method. So our goal is to design L section matching network, and the load is given to us ZL, and you can clearly see it is an RC load. This is resistance plus capacitance. So this is ZL is 200 minus J100 ohm, and we are going to connect this load to 100 ohm line. So this 100 ohm is basically Z0 of this line. And because in L network we are going to use ultimately capacitors or inductors, so we will be able to find out the values of capacitors or inductors once we also identify or specify the frequency. So the design frequency, this frequency for which we are designing our matching network is 500 megahertz. So with this given data, we need to design our L network. So the first step is, if I am designing this with the help of Smith chart technique. So the first step is selection of suitable network. Okay, so design procedure involves this first step and then second step. So first step is selection, and what we have done is we have step by step identified the method by which you will be able to find out the suitable network. So first thing is normalize the load and then find its position. So if I do this process, so first of all, I'm going to normalize my load. So normalize the given load. So what is the given load? ZL is 200 minus J100 ohm. So for normalization, I will be using Z0. So ZL
will be divided by Z naught. So 200 minus J100 divided by 100. So you get 2 minus J. And as before, I'm going to use a different symbol for normalized load, and I will call it ZL dash. So now what you need to do is find out where is this normalized load on the Smith chart. So this is the task, or this is what I want you to do. And that is the reason मैंने आपको कहा था कि आपके पास Smith chart होना चाहिए. So can you find its position on the Smith chart? And then tell me whether Yeah. it is inside of 1 plus jx circle or outside of 1 plus jx circle. Inside. Okay. Inside. Okay, so Inside, sir. okay, Inside. जी बाकी स्टूडेंट भी मुझे कंफर्म कर दें कि 2 स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इनसाइड है. So Inside होगा सर. find its position on Smith chart. Is it inside or outside of 1 plus jx circle? जी क्या आंसर है जी सबका? Inside sir. Inside. Okay. Inside. Inside. Okay, so ZL dash is inside of 1 plus jx circle. Therefore, कौन सा नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे? Number 1. Number one, Number one sir. which look like this. Okay. Therefore, we will select L network number 1. Okay. So now we are at this stage कि हमने select कर लिया है कि सर्किट जो हमें यूज करना है फिजिकली जब उसको हम डिजाइन करेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की होगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमने नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया है तो सेकंड स्टेप जो हमने अब लेना है we need to find out the values of the unknown parameters जो कि आपके पास x और b. ठीक है. सो अब हमारे पास जो सर्किट है उसमें x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी और इस तरीके से b की वैल्यू. So now question is how to find unknown parameters of this network using Smith chart. एनालिटिकली जब हम इस सर्किट को डिजाइन कर रहे थे तो ये जो स्टेप था इसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव की थी और उन इक्वेशंस में आप वैल्यूज जो आपके नोन होंगी ZL और Z नॉट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप X भी निकाल सकते हैं B भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब हमारा गोल ये है कि उन इक्वेशंस को हमने यूज नहीं करना. विदाउट using those equations that we discussed in our previous lecture, we are only going to rely on Smith chart, or Smith chart
जो कि ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल टूल है। ग्राफिकली हम इन दो अननोन जो वैल्यूज हैं पैरामीटर, ये कैसे फाइंड करेंगे? Let me write down some steps, and then do I will do these steps one by one, and you will follow along with me. Okay. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We we need to draw. We will draw (180° rotated) one plus jx circle on the Smith chart. You already know, जो मैं 1 plus jx circle का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, you already know कि ये किस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। और अब आपने क्या करना है, इसका एक रोटेटेड वर्जन आपने ड्रॉ करना होगा, और कितना उसको रोटेट करना है? 180°। तो अगर मैं इसको पहले सिंपल है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ था, ये वो सर्कल है जो कि ऑलरेडी स्मिथ चार्ट के ऊपर पहले से बना हुआ है। ठीक है, व्हाट आई नीड टू डू इज इसका रोटेटेड वर्जन, इसको रोटेट करना है हमने 180° के ऊपर। ठीक है, सो अगर आप इसको रोटेट करेंगे 180°, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन आई विल शो यू कि ये आपने कैसे ड्रॉ करना है। तो जब आप रोटेट करेंगे तो आपके पास इस तरह का सर्कल आना चाहिए। तो ये मैं इसको रोटेट कर, ये मैं कहूँगा कि कैसे, कौन सा सर्कल है? इट इज 180° rotated 1 plus jx circle। इसको आपने बनाना कैसे है, ड्रॉ कैसे करना है, और अभी आपने ड्यूरिंग दिस लेक्चर आपने इसको ड्रॉ करना है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि आपके साथ कंपास भी होना चाहिए, तो आप इस सर्कल को ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। तो अगर आप इसको देखें, ये जो सर्कल हम जो कि पहले से बना हुआ है स्मिथ चार्ट, लेकिन मैंने जब स्मिथ चार्ट को मैंने लेक्चर में जब इस पूरा एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि ये जो सर्कल हमने बनाए हुए हैं, ये एक इक्वेशन के बेस के ऊपर बनाए हुए हैं, और इस पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, और फिर इसका ये रेडियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर है स्मिथ चार्ट का, और ये जो सर्कल का एज है, ये जो लाइन है, विद हेल्प ऑफ द स्केल इसको आप मेजर करें कितना है। आई डोंट वांट टू नो कि ये कितना है। अगर आपके पास स्केल होगा तो आप देख लेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, जो भी है। तो अगर ये, लेट्स से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर एच तक अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ये 3 सेंटीमीटर पे आपके पास का सेंटर होगा। तो यहाँ पे आप इसको अपने कंपास को रखेंगे, और इसको कितना ओपन कर देंगे, जितना ये इसका सेंटर तक इसका रेडियस बनता है, इतना इसका रेडियस होगा, और ये सर्कल फिर आप बना। ठीक हो गया? अब मैं इसको एक्चुअल जो इसमें चार्ट है जो आपके पास होगा, सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपने क्या करना है। आपने ये जो सर्कल है जो कि स्मिथ चार्ट के ऊपर बना हुआ है पहले से, ठीक है, मैं अगेन इसको पूरा नहीं बताता, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस सर्कल की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? आपने इसका रोटेटेड वर्जन बनाना है, तो कैसे आपने बनाना होगा? आई विल गिव यू 2 or 3 minutes। जब आप ये सर्कल बना लेंगे तो फिर मैं आगे लेक्चर में प्रोसीड करूंगा। व्हाट आई वाज, जो मैं प्रीवियसली आपको कह रहा था कि आपने क्या करना है, आपने ये जो इस पॉइंट से लेकर ये जो स्मिथ चार्ट का बिल्कुल बाउंड्री है,
आपने देखना है कि ये जो लाइन है, स्केल आपने रखना है इसके सामने, इसके ऊपर, और ये देखना है कि ये लाइन इसकी लेंथ कितनी है। ठीक हो गया? ये लाइन की लेंथ आप फाइंड करने के बाद आप देख लेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे आता है। मैं इस वक्त रफली बना रहा हूँ, आपके पास स्केल होगा तो आप ये को आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कंपास को यहाँ रख के आपने इसका रोटेटेड वर्जन बनाना होगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ इस तरह का सर्कल होगा। मे बी मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बना सक रहा, आपके पास कंपास है तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ एग्जैक्ट सर्कल, जिस सर्कल की हम बात करेंगे। और हमारा आगे जो अ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो इस सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मेक श्योर कि ये सर्कल आप जितना एग्जैक्ट बना सकते हैं। बट नाउ यू नो कि ये सर्कल कैसे बनाना है। क्लियर हो गया जी? Yes, sir. तो आई विल अगेन, जब तक आप ये सर्कल बना नहीं लेते, जो स्मिथ चार्ट आपके सामने होगा उस वक्त, उसके आगे मैं फिर वेट कर रहा हूँ। सो व्हेन ऑल स्टूडेंट्स अगर आप ये सर्कल बना लें तो फिर आप मुझे बता दें कि सर आके आपने ये सर्कल बना लिया है, तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है सर जी, बताएं। सर ये दोनों सर्कल सेम हो गए, इसका रेडियस सेम होगा या बिल्कुल सेम डिफरेंट होगा, होगा? सेम होगा। तभी तो मैंने कहा कि ये सर्कल यहाँ पे एक दूसरे को साथ देखना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है। ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो मैंने कहा था ना कि ये आपका अगर सेंटर जब आप फाइंड कर लें तो इसका ये यहाँ तक, जहाँ तक ये इसका सेंटर है, ये आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो आपने जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस आपने इतना रखा, सो दैट इट इज एग्जैक्टली टचिंग द ओरिजिनल, जो कि वो सर्कल, जो कि ये सर्कल ऑफ कोर्स ये तो बना हुआ है ना। ठीक है ना, इसको तो आप नहीं बनाएंगे, मैंने तभी इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। ये तो हमारा रेफरेंस है। इस सर्कल का अगर आप इन दोनों सर्कल को आप कंपेयर करेंगे तो आप इजीली विजुअली देख सकते हैं कि इन दोनों सर्कल्स में क्या रिलेशनशिप है। ये जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, ये एक्चुअली एज इफ आपने क्या किया, इस सर्कल को 180 डिग्री पे रोटेट कर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस कि अगर हम अज्यूम करें कि ये यहाँ पे अगर आप इसको अज्यूम करें कि ये ये एक लाइन है। ठीक है, तो आपने इसका मिरर इमेज बना दिया है। सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, आपने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया। ठीक हो गया? लेट मी finish this meeting. Okay, less than 1 minute remaining, and then I will start my meeting after 2 minutes. इस दौरान में आप ये सर्कल बना लेंगे तो फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक।